Assalamu alaikum students. Today we are going to start the translation of unit number 7, which is name is self, people and places. Let's start our translation, which is on page number 132. So the translation is, the name of that translation is Abraham Lincoln letters to his son's teacher. Abraham Lincoln का जो खत है to his उसके बेटे की टीचर के नाम. My son starts school today. मेरा बेटा आज स्कूल शुरू कर रहा है. It is all going to be strange. ये सब कुछ वक्त के लिए उसके लिए अजीब and new to him और नया है उसके लिए for a while and I wish you would treat him gently. और इसके लिए नया होने वाला है और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएं. It is an adventure. ये एक ऐसी मुहिम है that might take him across continents, जो इसको पूरे बर्रे-आज़मों में ले जा सकती है. All adventures, तमाम मुहिमें that probably included, जिसके अंदर शायद शामिल हैं war, tragedy and sorrow, जिनमें जंगें, अलमियाँ और दुख शामिल हैं. To live this life, इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए will require, ज़रूरत पड़ेगी faith, love and courage, ईमान, मोहब्बत और हिम्मत की. So dear teacher, लिहाजा मोहतरम उस्ताद, will you please take him by his hand? इसे सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा तमाम मर्द आदिल नहीं होते. Like he says, will you please, क्या आप टेक हिम बाय हिज हैंड, आप उसको अपनी निगरानी में लेंगे एंड टीच हिम, और उसको ये चीज़ सिखाएंगे थिंग्स ही विल हैव टू नो, कि वो जाने, टीच हिम, उसे सिखाएं बट जेंटली, नरमी के साथ, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं. टीच हिम, उसे ये सिखाएं दैट फॉर एवरी एनिमी, कि हर दुश्मन, देयर इज़ अ फ्रेंड, एक दोस्त भी होता है. उसको आप ये चीज़ सिखाएं कि हर बदमाश के लिए एक हीरो होता है और हर एक दुश्मन के लिए एक दोस्त भी होता है. ही विल हैव टू नो, उसे मालूम होना चाहिए दैट ऑल मेंस आर नॉट जस्ट, कि तमाम मर्द सच्चे नहीं होते, आदिल नहीं हैं. दैट ऑल मेंस आर नॉट ट्रू, ना ही वो सच्चे हैं. बट टीच हिम, लेकिन उसे ये सिखाएं आल्सो दैट फॉर एवरी स्कॉन्ड्रल, कि हर बदमाश के लिए देयर इज़ अ हीरो, कि उसको ये भी आप सिखाओ कि हर दुश्मन के लिए एक दोस्त होता है और हर बदमाश जो है उसके लिए एक हीरो होता है. दैट फॉर एवरी क्रुक्ड पॉलिटिशियन, और उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि हर खुदगर्ज सियासतदान के लिए पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर, एक सरशार लीडर भी होता है. टीच हिम, उसे सिखाएं इफ़ यू कैन दैट 10 cent अर्न इज़ ऑफ फॉर मोर वैल्यू देन $1 फाउंड. अगर आप कर सकते हैं तो उसे सिखाएं कि कमाए गए 10 सेंट की कीमत $1 से कहीं ज़्यादा है. टीच हिम, उसे सिखाएं इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं दैट 10 cent अर्न, कि 10 सेंट कमाए हुए इज़ ऑफ फॉर मोर वैल्यू, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है देन $1 फाउंड, $1 कमाने से. इन स्कूल में टीचर, इट इज़ फॉर मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट. और जो स्कूल है, स्कूल में फेल होना उस्ताद को धोखा देने से कहीं ज़्यादा इज़्ज़त की बात है. ही सेज टीच हिम इन स्कूल के अंदर टीचर इट इज़ फॉर मोर ऑनरेबल, बहुत इज़्ज़त के काबिल है टू फेल, कि वो फेल हो जाए, देन टू चीट करके. मीन्स कि चीटिंग करके पास होने से बेहतर है कि अगर वो इज़्ज़त के साथ फेल हो जाए, कोई चीटिंग ना करे, तो इट्स मोर बेटर देन चीटिंग. टीच हिम टू लर्न हाउ टू ग्रेसफुली लूज एंड एंजॉय विनिंग व्हेन ही डज विन. टीच हिम, उसको ये भी सिखाएं कि किस तरह खूबसूरती से हारना है और जब वो जीतता है तो जीतने से लुत्फ़अंदोज़ होता है. टीच हिम, उसे सिखाएं टू बी जेंटल विद पीपल, अगर आप कर सकते हैं उसे लोगों के साथ नरमी. टफ विद टफ पीपल, उसे लोगों के साथ नरमी, सख्त लोगों के साथ सख्ती करना सिखाएं.
steer him away from envy. اگر ہو سکے تو اسے حسد سے دور رکھیں. if you can and teach him, اگر آپ کر سکتے ہیں تو اسے سکھائیں the secret of quiet laughter. اسے سکھائیں کہ اسے خاموش ہنسی کا راز سکھائیں. teach him if you can how to laugh when he is sad. اگر ہو سکے تو اسے سکھائیں کہ جب وہ اداس ہو تو اسے کیسے ہنسنا ہے. teach him, اسے سکھائیں there is no shame in tears. اور اسے یہ سکھائیں کہ جو آنسوؤں میں کوئی بھی شرم نہیں ہے. اگر دکھ محسوس ہوتا ہے تو وہ رو لے, اگر اس کے آنسو نکل آئیں گے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے. teach him there can be glory in failures and despair in success. اور اس کو یہ سکھائیں کہ ناکامی میں شان اور کامیابی میں مایوسی ہو سکتی ہے. teach him to scoff at cynic. اسے گھٹیا لوگوں کا مذاق اڑانا اور بہت زیادہ مٹھاس سے بچنا سیکھنا چاہیے, سکھائیں. teach him if you can the wonder of books. اسے اگر آپ کتاب کے عجائبات کر سکتے ہیں تو اسے سکھائیں. but also give time to ponder the extreme mystery of bird in the sky. لیکن آسمانوں پر پرندوں, bees in the sun, جو شہد کی مکھیاں ہیں جو سورج میں, and flower on a green hill, اور سبز پہاڑیوں پر پھولوں کے انتہائی اسرار پر غور کرنے کے لیے بھی وقت دیں. teach him, اسے سکھائیں to have faith in his own ideas. اسے اپنے خیالات پر یقین رکھنا سکھائیں. even if everyone tell him they are wrong. چاہے ہر کوئی اس کو کہہ رہا ہو کہ وہ غلط ہے. مینس کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے اپنے خیالات پر جمے رہنا چاہیے. so try to give my son, کوشش کریں کہ میرے بیٹے کو the strength not to follow the crowd. میرے بیٹے کو طاقت دینے کی کوشش کریں کہ وہ بھیڑ کی پیروی نہ کرے. when everyone else is doing it. جب ہر کوئی وہ چیز کر رہا ہو تو وہ بھیڑ کی پیروی نہ کرے بلکہ جو صحیح بات ہے اس پہ چلے جب باقی سب ایسا کر رہے ہوں. is done. so next is doing it. teach him to listen to everyone. اسے سکھائیں کہ وہ ہر ایک کی بات سنیں. but teach him, لیکن اسے یہ بھی سکھائیں also to filter, کہ وہ چھان سکے, پہچان سکے all that, ان تمام چیزوں کو he hear, جو وہ سنتا ہے on a screen, جو وہ سنے سب سے, of truth, اور اس میں سے سچائی نکالے, and take only the good that comes through. اور اسے یہ بھی سکھائیں کہ وہ سچائی کے پردے پر جو کچھ سنتا ہے اسے چھان بین کرے, چھانے, خود جانے اور اس کے ذریعے آنے والی اچھی چیزوں کو اپنائے. teach him, اس کے ساتھ اسے سکھائیں to sell his talent and brain to the highest bidder, but never to put a price tag on his heart and soul. اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, اسے گلے نہ لگاؤ, کیونکہ صرف آگ کا امتحان ہی عمدہ فولاد بناتا ہے. let him have the courage to be impatient. اسے بے صبرا ہونے کی ہمت دو. let him have the patience to be brave. اسے بہادر بننے کا حوصلہ ہو, حوصلہ بھی دیں, حوصلہ سکھائیں. teach him to have sublime faith in himself. اسے سکھائیں کہ وہ اپنے آپ پر اعلیٰ ایمان رکھے, مکمل یقین رکھے. کیونکہ then he will always have sublime faith in mankind in God. کیونکہ اس کے بعد ہی وہ ہمیشہ بنی نوع انسان پر, خدا پر اعلیٰ ایمان رکھے گا. this is the order. یہ ایک بڑا حکم ہے. but see, لیکن دیکھو. what best you can do,
کہ تم کیا کر سکتے ہو. He is such a nice little boy. وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، لڑکا ہے. And he is my son. اور وہ میرا بیٹا ہے. Thank you so much. I hope that you understand all the translation which I told you. So subscribe my channel. Thank you so much.